kids, welcome to grade 9 history class. In today's class we're going to discuss chapter number 7, जो है history and sport, the story of cricket, and today's session will be session number 5. So in this session we are going to discuss about cricket, race and religion के बारे में. Cricket in colonial India was organized on the principle of race and religion. The first record we have of cricket being played in India is from 1721, an account of recreational cricket played by English sailors in Bombay. क्रिकेट जो है कॉलोनियल इंडिया में वो ऑर्गेनाइज किया जाता था ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेस एंड रिलीजन. तो इस तरीके से उसमें डिवीजन रहता था. जो फर्स्ट रिकॉर्ड है क्रिकेट का दैट बीइंग प्लेड इन इंडिया वो है फ्रॉम 1721 से, और वो एक अकाउंट है कि वो रिक्रिएशनल क्रिकेट जो है प्ले किया बाय इंग्लिश सेलर्स ने. The first Indian club, the Calcutta Cricket Club, was established in 1792. Through the 18th century, cricket in India was almost wholly a sport played by British military men and civil servants in all white clubs and gymkhanas. तो जो फर्स्ट इंडियन क्लब था उसको जो बनाया गया, जो एस्टैब्लिश किया गया, वो था 1792 में, और वो था कैलकटा क्रिकेट क्लब. थ्रू द 18th सेंचुरी क्रिकेट जो था इंडिया में वो ऑलमोस्ट होली एक पूरी तरीके से वो ऐसा स्पोर्ट था जो प्ले किया जाता था बाय ब्रिटिश मिलिट्री मैन जो हैं एंड सिविल सर्वेंट्स जो हैं इन ऑल वाइट जो क्लब्स होते थे एंड जिम खानाज होते थे. तो दिस इज हाउ इट वाज, इस तरीके से उसको देखा जाता था कि ऑल वाइट मेन का गेम है. Playing cricket in the privacy of these clubs were more than just fun. It was also an escape from the strangeness, discomfort and danger of their stay in India. Indians were considered to have no talent for the game and certainly not meant to play it, but they did. Playing cricket जो था अपने प्राइवेसी जो वो क्लब्स में खेलते थे, जिम खानाज में खेलते थे, तो इट वाज नॉट जस्ट फन, इट वाज आल्सो उनके लिए स्केप था जो स्ट्रेंजनेस से था, डिस्कम्फर्ट से था एंड डेंजर जो था उनके लिए जो इंडिया में रह रहे थे. सो इंडिया जो है वो जो इंडियन लोग थे जो क्रिकेट खेलते थे तो ऐसा सोचा जाता था कि उनके पास कोई भी टैलेंट नहीं है टू प्ले द गेम, एंड सर्टेनली दे आर नॉट मेंट टू प्ले द गेम, बट दे स्टिल डिड. The origins of Indian cricket, that is cricket played by Indians, are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was a small community of Zoroastrians, the Parsis. तो जो origin है Indian cricket का वो है cricket जो है वो played by Indian to be found in Bombay. तो वो बॉम्बे में है कि वो सबसे पहले वहीं पे उन्होंने खेला. जो ओरिजिन है इंडियन क्रिकेट का, एंड जो फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी जो है जिसने इस गेम को खेलना शुरू किया वो है पारसी कम्युनिटी. Parsi clubs were funded and sponsored by Parsi businessmen like the Tatas and the Vadias. The white cricket elite in India offered no help to the enthusiastic Parsis. तो जो पारसी क्लब्स थे वो कौन फंड करता था, उनको फंड करते थे, स्पॉन्सर करते थे जो पारसी बिजनेसमैन थे, और वो जो पारसी बिजनेसमैन थे वो थे टाटाज एंड ऑल्सो वाडियाज. जो वाइट क्रिकेट एलीट थे इंडिया में उन्होंने कोई भी हेल्प नहीं दी. ये जो एंथुजियास्टिक पारसीज थे जो क्रिकेट का गेम खेलना चाहते थे तो उनको कोई भी हेल्प नहीं दी. In fact, there was a quarrel between the Bombay Gymkhana, a whites only club, and Parsi cricketers over the use of a public park. The Parsis complained that the park was left unfit for cricket because the polo ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface. तो इनफैक्ट जो एक लड़ाई भी हुई बिटवीन जो बॉम्बे जिमखाना के लोग थे एंड वाइट ओनली क्लब, बिकॉज पारसी क्रिकेटर जो है उनके उन्होंने जो यूज़ करा पब्लिक पार्क का उसके ऊपर ये लड़ाई हुई. जो पारसीज थे उन्होंने कंप्लेन किया कि जो पार्क था दैट वाज लेफ्ट अनफिट, कि वो अनफिट हो गया था क्रिकेट के लिए बिकॉज जो पोलो पोनीज है उनके वजह से. तो दैट इज वाई ये जो एक लड़ाई सी हुई वो हुई. When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white competitors, the Parsis built their own gymkhana to play cricket in. The rivalry between the Parsis and the racist Bombay Gymkhana had a happy ending for these pioneers of Indian cricket.
When it came to clear that the colonial authority जो थी वो prejudice थी in favor of their जो white compatriots थे, जो पारसी लोग थे, फिर उन्होंने अपना खुद का जिम खाना बनाया जिसमें वो क्रिकेट खेलने लगे. जो राइवलरी थी बिटवीन द पारसीज एंड द रेसिस बॉम्ब जिम खाना, उसकी बहुत ही हैप्पी एंडिंग हुई फॉर दीज पायनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट. The establishment of the Parsi Gymkhana became a precedent for other Indians, who in turn established clubs based on the idea of religious community. By the 1890s, Hindu and Muslims were busy gathering funds and support for a Hindu Gymkhana and an Islam Gymkhana. तो जो establishment था पारसी जिमखाना का, वो एक प्रेसिडेंट बन गया अदर इंडियंस के लिए, जो इन टर्न उन्होंने establish कर दिया अपने क्लब्स बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी जो है, तो उन्होंने एक एक रिलीजियस कम्युनिटी का बनाना शुरू कर दिया. बाय द 1890s हिंदू एंड मुस्लिम जो थे वो इतने बिजी थे फंड्स गैदर करने के लिए और सपोर्ट के लिए कि वो एक हिंदू जिमखाना बनाए और एक इस्लाम जिमखाना बने. In the late 19th century, many Indian institutions and movements were organized around the idea of religious community because the colonial state encouraged these divisions and was quick to recognize communal institutions. लेट 19 सेंचुरी में बहुत सारे जो इंडियन इंस्टीट्यूशन थे एंड मूवमेंट्स थे वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे. दे वर ऑर्गेनाइज अराउंड द इंडिया जो है रिलीजियस कम्युनिटी. तो अराउंड द आइडिया ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी वो ये सब करने की कोशिश कर रहे थे बिकॉज जो कॉलोनियल स्टेट है उन्होंने इंकरेज किया कि ये डिवीजन हो एंड दैट वाज क्विक टू रिकॉग्नाइज कम्युनल इंस्टीट्यूशंस. This history of Gymkhana cricket led to first-class cricket being organized on communal and racial lines. The teams that played colonial India's greatest and most famous first-class cricket tournament did not represent regions as teams in today's Ranji Trophy certainly currently do, but religious communities. तो ये जो हिस्ट्री है जिमखाना क्रिकेट की दैट लेड टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है इंडिया में ऑर्गेनाइज शुरू होने लगा on communal and racial lines. जो टीम थी that played colonial India's जो greatest game है वो खेला and most famous first class cricket tournament. So that did not represent regions as today in India's Ranji Trophy currently do, but religious communities. The tournament was initially called the quadrangular because it was played by 4 teams: the Europeans, the Parsis, the Hindus and the Muslim. तो ये जो टूर्नामेंट था पहले उसको quadrangular बुलाया गया because वो खेला जाता था 4 लोगों के बीच में, 4 टीम्स के बीच में, and those 4 teams were from Europeans की थी, Parsis, the Hindus and the Muslims. It later became the quadrangular when a 5th team was added, namely the rest, which comprised all the communities left over, such as the Indian Christians. For example, Vijay Hazare Christian played for the rest. It later became the pentagular, जो एक ग्रुप है उस तरीके से बन गया, जबकि एक 5th टीम जो है उसको ऐड किया गया, namely the rest, which comprised of सारी community उसमें left over जो सब कुछ था वो इसमें था, such as the Indian citizens, कि उसमें भी सारे तरीके के लोग होते हैं. For example, विजय हजारे जो थे वो एक क्रिश्चियन थे, played for the rest. So that's all we have discussed in this session about जो cricket है किस तरीके से उसमें changes है, किस तरीके से cricket था पहले. That's all in this session. Thank you.